प्रमोद बोड़ो के नेतृत्व में कल बीटीआर में नए परिषद का शपथ ग्रहण होगा। मुख्य कार्यवाही सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे प्रमोद बोड़ो। यूपीपीएल से 2, भाजपा से 2 और गण सुरक्षा पार्टी से 1 यानी कुल 5 सदस्य कल शपथ लेंगे। इधर आखिरी वक्त तक हग्रामा मोहिलारी सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सत्रह सालों बाद बीटीसी में नए परिषद का गठन होगा। प्रमोद बोड़ो के नेतृत्व में कल नया परिषद शपथ ग्रहण करेगा, जिसके नए मुख्य कार्यवाही सदस्य होंगे प्रमोद बोड़ो। कल सुबह 10:30 बजे यूपीपीएल, बीजेपी और जीएसपी बीटीसी में नए परिषद का गठन करेगी। कल यूपीपीएल से 2, बीजेपी से 2 और जीएसपी से 1 सदस्य यानी कुल 5 सदस्य शपथ लेंगे। प्रमोद बोड़ो जहां बीटीसी के नए मुख्य कार्यवाही सदस्य होंगे, तो वहीं उप कार्यवाही सदस्य की जिम्मेदारी भी यूपीपीएल के कोटे में ही जाएगी। 5 জন ব্যক্তিয়ে অহাকালি শপথ লব, 2 জন यूपीपीएलৰ পৰা আৰু बीटीसीৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ দুইটাই यूपीपीएलৰ লগত থাকিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 2 জনে শপথ লব আৰু 1জন जीएसपीৰ শপথ লব। কালি 5 জনে শপথ। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कल सुबह कोकराझार में विधानसभा के पास के ग्रीन फील्ड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 लाख मेहमान जुटेंगे। वहीं शपथ ग्रहण के लिए कोकराझार पहुंचे नए मुख्य कार्यवाही सदस्य प्रमोद बोड़ो का जोरदार स्वागत किया गया। অহাকালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া থাকিব অফিচিয়েলি, আৰু আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব। বাকী আমাৰ এমপি মিনিষ্টাৰ এইবিলাক থাকিব আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ নেতাসকল থাকিব। দিল্লীৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অফিচিয়েল পাৰ্চন নাহে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি দলৰ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, গতিকে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহিব। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি আছে ৰাজ্যিক, আৰু বিভিন্ন পদবী যিবিলাক আছে সবে আমাৰ আহি যাব। বিভিন্ন কাউন্সিলৰ CM टीम সেইবিলাকো আহি যাব। कल सुबह नए परिषद का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन हग्रामा मोहिलारी अभी भी आखिरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बीच प्रमोद बोड़ो ने बीपीएफ पर बड़ा आरोप लगाया। बीपीएफर बहुत नेताई যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ নামটো এতিয়া নকওঁ, মই গধূলি কম, কিন্তু বহুতে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু আমাৰ তাত আহিব। তেখেতসকলে টকা পইচা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আমাৰ তাত এনেকুৱা নহয়। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता विश्वजीत देमारी का भी कहना है कि बीपीएफ के 6 सदस्य बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं हग्रामा मोहिलारी के सरकार गठन के दावे पर विश्वजीत देमारी ने कहा कि मोहिलारी का दावा अब कोई मायने नहीं रखता, अब वो पुरानी बात हो चुकी है। हग्रामा मोहिलारी खुद भी अब वो समझ चुके हैं। यूपीपीएলৰ কথাটো নাজানো, আমাৰ বিজেপিৰ লগত যিখিনি কথা বাৰ্তা হৈছে 5 জনমান আমাৰ অলৰেডি 5-6 জন অলৰেডি হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে। নাই তেওঁৰ কথা, তেওঁ আজি সিংগল মেজৰিটি পাইছে কাৰণে কিছু তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটো ডেফিনেটলি ৰাজনীতিক চলে তেওঁৰ চেষ্টাটো। গতিকে আৰু এতিয়া সেই যিমানে চেষ্টা নকৰক এতিয়া নচলে আৰু। এতিয়া হগ্ৰামা ডাঙৰীয়া যোৱাকালিলৈকে কৈছিল তেওঁৰ লেভেলত সেইটো ঠিকেই আছিলে, কিন্তু আজি সব গভৰ্ণৰৰ পৰা অটিকিংলৈকে অহাৰ পিছতো আৰু আপুনি ক'ত দেখুৱাব। তাৰ কাৰণে সেইটো যোৱাকালিৰ কথা আছিল। মই ভাবোঁ আজি যদি সোধে হগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া আৰু যোৱাকালিৰ কথাটো নকয়। लेकिन मित्रता की आस में आखिरी क्षण तक लड़ रहे बीपीएफ का कहना है कि अगर उनकी बातें मानी नहीं गई तो वे कानून का सहारा लेंगे। এই তথ্যৰ ভিত্তিত গভৰ্ণৰে কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোলৈ আমি মানে অপেক্ষা কৰিছোঁ, আৰু নহ'লে আমি আইনগতভাৱে মুভ কৰিবৰ কাৰণে বা আগবাঢ়িবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। যদি তেওঁলোকে নকৰে আমি কোৰ্ট যাব লাগিব, লিগেলি আমি মুভ কৰিব লাগিব। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।